Hello student, today we will study about the descriptive statistics and its three kinds. So descriptive statistics is a statistics which helps us to describe or summarize the data, that how our data looks like. Descriptive statistics is our past data. So whatever the data we have collected is known as descriptive statistics. It helps us in summarizing the data or understanding the data, that how our data looks like, whether the data points are close to each other or it is far away from each other. With the help of descriptive statistics, we also came to know whether our trends are increasing or not with the help of charts or tables. So now we will see is three kinds. So what are these three kinds? The first type is measure of center tendency. So what is this center tendency? Center tendency वो टाइप्स होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो हमें हेल्प करता है सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सीरीज है और हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो उस सीरीज को रिप्रेजेंट करता हो, देन इन दैट केस वी विल यूज द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, दैट इज अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. फॉर एग्जाम्पल, if we want to know the height of a boy in a class, we will take the average value as the best value for that. Now, mean is also used to compare the height. For example, if we want to compare the height of a boy or a girl, then we will use mean. For example, the average value of a height of a boy is 6 and the average value of a height of a girl is 5. Then we can say the height of a boy is greater than a girl by comparing its mean. With the help of mean, median and mode, we can able to calculate the center tendency. So let's see one by one how to calculate mean. And what is mean first? So mean is the average value, as you all know, and it is of two types: population mean, which is represented by mu, and sample mean, which is represented by x bar. Population mean is a mean which is a mean of a population, while sample mean is a mean of a sample. So it is very easy, no? Now we will see how to calculate mean. Suppose this is a series. So what do you think? What is the best representative number for this series? So in that case, I think mean is the best representative for this series. So we will calculate mean. So how we will calculate mean? So first we will add all these data points and then we divide this with the total number of data points. So our total number of data points is 5. So we will divide this with 5 and the sum is 20. So we will divide this with 20. So 4 is our answer. So 4 is the mean for this series. Now come to the median. What is median? Median divides the data in two parts. ये हमारे डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये हमारे डेटा का सेंट्रल वैल्यू होता है. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड. अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा इन सीरीज इज ऑड, देन इन दैट केस इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड बिकॉज आवर सेंट्रल वैल्यू विल बी आवर मीडियन. तो ये बहुत ईजिली पता चल जाता है अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑड है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 3 हमारा मीडियन होगा क्योंकि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है. ना इन द केस ऑफ इवन नंबर, अगर हमारी सीरीज इवन नंबर में है, देन इन दैट केस आप क्या करोगे कि आप इस डेटा सीरीज को आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे. तो आप देख सकते हो कि 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये हमारा पार्टीशन लाइन है एंड द नंबर विच इज़ क्लोज टू दिस पार्टीशन लाइन उसको हम ऐड कर देंगे. तो 4 और 3 को हम ऐड करके उसका हम एवरेज निकाल लेंगे. तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 and 3.5 is our answer. So 3.5 is the median for this type of even number of series. Now come to the mode. What is mode? Mode is the highest frequency value. मतलब कि अगर हमारी सीरीज में ऐसा नंबर, ऐसा डेटा पॉइंट जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो हम कंसिडर करते हैं मोड. तो वैसा पॉइंट हमारा मोड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, जैसे ये एक सीरीज है, इसमें आप देख सकते हैं 9 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर नंबर. सो इन दैट केस 9 इज आवर मोड इन दिस सीरीज. नाउ व्हेन टू यूज मीन, मीडियन एंड मोड, ये हम कब यूज़ करेंगे? कौन सा ऐसा केसेस है जिसमें हम मीन, मीडियन और मोड यूज़ कर सकते हैं?
सपोज हमारे पास एक सीरीज़ है, जैसे कि ये हमारे पास एक सीरीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं इन सीरीज़ में सारे डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज है, बट हमारा एक डेटा पॉइंट्स ऐसा है जो इन बाकी डेटा पॉइंट से काफ़ी अलग है, और ये ऐसा डेटा पॉइंट विच इज़ फार अवे फ्रॉम द अदर डेटा पॉइंट्स आर कॉल्ड स्ट्रीम वैल्यू. It is also called outlier. So if you have outlier in a data set or in a series, then in that case you will not calculate mean, because if you will calculate mean, then you will see a lot of deviation. Like here you can see I have calculated mean. मैंने यहाँ पे mean calculate किया है इन सबको जोड़ के, तो आप देख सकते हैं इसकी mean 23.6 आई है. तो ये mean आप देख सकते हो कितना डिफर कर रहा है बाकी डेटा पॉइंट से. वाइल अगर हम इसका मीडियन निकालें तो इसका मीडियन ये सेंटर पॉइंट होगा. सो 3 विल बी आवर मीडियन. सो मीडियन इज द बेस्ट ऑप्शन इन द केस ऑफ अ सीरीज और द डेटा सेट विच हैज आउटलायर्स. सो if you have series which has outlier, then in that case you will calculate median. And when to calculate mode? Mode you will calculate in the case of categorical variable. Suppose अगर आपके पास एक वेरिएबल है जेंडर की और उसमें मेल और फीमेल दो कैटेगरी है. अगर आपकी कैटेगरी में मेल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देन इन दैट केस यू विल कैलकुलेट मोड. सो मोड वी यूज इन द केस ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल. नाउ वी विल सी अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. व्हाट इज दिस मेजर ऑफ डिस्पर्शन? मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि हमारा डेटा पॉइंट क्या एक दूसरे के क्लोज है, वेदर इट इज़ क्लोज टू अ मीन और इट इज़ फार अवे फ्रॉम द मीन. तो ये हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन के हेल्प से पता चलता है. और ये हम कैसे जानते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस, विद द हेल्प ऑफ IQR, we came to know whether our data points are close to each other and how it is dispersed or whether it is far away from each other. Now come to the measure of symmetricity. Measure of symmetricity helps us to know the shape of our data set. Normally the shape is normally distributed, but if you have outliers in the data set, then it will be skewed. So it will show whether it is highly skewed or whether it is negatively skewed or whether it is positively skewed. So we came to know with the help of this measure of symmetricity. By finding our skewness and kurtosis, we came to know the shape of our data set. So thank you student. In the next class, we will discuss in detail about the measure of dispersion and measure of symmetricity. So if you like my video, then please like and subscribe, and we will meet in the next video. Thank you.